Absolutely. And when you say new challenges, it's important to, understand that the vice president-elect, the new vice president as ex officio chairman of the Rajya Sabha has to preside over the upper house of parliament, wherein all of these challenges are discussed, all of these issues are brought about, and the kind of pandemonium that we have seen, it's going to be a big challenge we've discussed earlier on in the program. Mr. Tandon, this is one area, house management, we all know, and as Mr. Fukun rightly said earlier on, that in Lok Sabha, it's easier for the government because it's an absolute majority. In Rajya Sabha, the numbers are not completely in a majority for the ruling party, and that's where it has to depend on some of these parties like YSR Congress, the BJD, to get crucial bills passed. In the wake of the fact that house management in the upper house is relatively a tougher job, if we make comparisons between the outgoing vice president and the vice president-elect, which in all probability is going to be Mr. Jagdeep Dhankar, Mr. Naidu had, of course, a huge advantage. He served as the Parliamentary Affairs Minister, and that in his tenure helped him as well in running the House. While on the other side, if we look at the fact that, Mr. Dhankar is somebody who is not served as the Parliamentary Affairs Minister, the kind of bonhomie that Mr. Naidu enjoyed with the opposition candidates, that is something that, Mr. Dhankar will have to build up, in his tenure. So I'll take that question in just a while, but as you can see on your screens, Prime Minister Narendra Modi now arriving at the venue inside the Parliament complex, room number 63, where the voting procedure has begun. In fact, he's going to be the first person to actually cast his vote to elect the 14th Vice President of the country. The other members of Parliament standing there in queue. So once the Prime Minister casts his vote, after that, the other members of Parliament will also exercise their vote. Coming back to Mr. Tandon on the question that, I was asking about the kind of similarities and the challenges as Mr. Dhankar, gets set to take on from Mr. Naidu in this huge responsibility of being the ex officio chairman of the Rajya Sabha, sir. Of course, there's no doubt that Mr. Venkaiah Naidu had a huge experience in public life. He was a minister, union minister, even in the Vajpayee government. He was the party president of the BJP. And he has held so many posts in Mr. Narendra Modi's cabinet also. So he had that experience, there is no doubt about it. But the way he used to conduct the Rajya Sabha, there is a business advisory committee meeting every day in the morning. And there the business is discussed and finalized. And the presiding officers invariably follow that decision. But we see sometimes opposition is not satisfied with that. So Mr. Venkaiah Naidu even used to call individual opposition leaders to his chamber to find out a way out, find a way how and when to discuss certain things under which rule. So in a very systematic, methodical manner, Venkaiah Naidu used to conduct the House. And I have not come across any allegation against him from any quarter in the opposition that he was partial. So he tried his best, and that's why when we see when the outgoing vice president will be, honored in the House, all sorts of, we'll see, tributes will be paid to his contribution, etc. Not a single opposition leader will complain about it. But now coming back to the incumbent, Mr. Dhankar, I think he also has an experience. He has been in public life for a very long time. He was also a cabinet minister. And one very interesting aspect about Mr. Dhankar is that he is not an original BJP leader. He had his, stint in certain other political parties also. And he has a socialist background. So therefore, the opposition will also feel it much easier to communicate with Mr. Dhankar as the presiding officer of the Rajya Sabha. So therefore, you can't straight away say that he has been picked up by the party. And his tenure as West Bengal governor also was very, very effective. Although he used to take on Mamata Banerjee, and Mamata Banerjee would obviously quite often complain against him, but he conducted very well as governor of West Bengal. So I have absolutely no reason why Mr. Dhankar cannot conduct the proceedings of the Rajya Sabha in a systematic, under the rules, and also to the satisfaction of all sections of the House. So I have absolutely confidence that
the kind of experience he has got, it may not be difficult for him. Coming back to your point that the ruling alliance does not have absolute majority, but tell me, in the last 5 years, has there been any situation in the NDA was put on the back foot? The reason being, again saying that the opposition has never been united in cornering the government even in the Rajya Sabha. Forget about Lok Sabha, where they don't have numbers, but when they have numbers in the Rajya Sabha, tell me one occasion when the entire opposition united to corner the government, or even in a division. The voting pattern was never reflected as a united opposition. So in a way, it was a field day for the ruling party. The NDA is having all the agenda passed through the Rajya Sabha and legislative business also, because many regional parties are not in tune with the mainstream, the so-called mainstream opposition party. Even Mamata Banerjee is a regional political party having a large number of MPs. The problem is basically which other, in fact, my other co-panelists were saying, see, the opposition has not been able to put up a united. Here the reason lies because the main opposition, Congress party, is very weak. If I may quote, when after 2009, when BJP was in a very desperate situation, the editorially, most of the veteran journalists used to advise BJP, please put up your house in order, face the challenge. And now the opposition needs an advice from veteran journalists and editorially that please, Congress party, revive yourself. This is not the way revive. Why are you sticking to just one family? Leave that family and grow the party for the sake of democracy in India. That kind of advice needs to be given to the Congress party today, because if they are not in a position to play the role of main opposition. Absolutely, that's an existential crisis that we've spoken, earlier on as well about the Congress and its role as the main opposition party as well. But we'll continue talking about all of those aspects. But as on your screens, you can see the Prime Minister casting his vote to elect the 14th Vice President of the country. And now the members of the Parliament will exercise their vote one by one. So these are visuals from just a short while ago when the Prime Minister entered the venue, the room number 63, where the voting procedure to elect the 14th Vice President of the country is taking place. Coming back to the studio, wherein we have two new guests, Ms. Aditi Fadnis and Mr. Akush Srivastava, both senior journalists joining us on the program. Thank you for your time and welcome to Sansad TV. Aditi ji, before you joined us, we were discussing about both the candidates, how both of them have very, very strong backgrounds, and the opposition, of course, has not let the ruling alliance take a walkover, especially when it comes to such crucial election. So even though the numbers may be stacked heavily in favor of the NDA nominee, the fact that Margaret Alava also is a significantly very, very strong contender for the post is something that we have spoken about earlier on. And now the challenge that the Vice President-elect is going to face as the ex-officio chairman of the Rajya Sabha, that's going to be one challenge, looking at the kind of pandemonium we've seen over the past few weeks in running both houses, especially the Rajya Sabha, where the government is not in absolute majority. Well, yes, you're right. First of all, it's a walkover. We know that. Mr. Dhankar, come 5 o'clock, will be declared the Vice President and the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. But conducting the Rajya Sabha after that is not going to be very easy, although he's very distinguished. He has a very thorough knowledge of rules, regulations and laws and precedents, and understands the issues that are involved in conducting the House. But there are one or two things on which we have to pay special attention. One is Mr. Venkaiah Naidu's legacy. As you know, Mr. Venkaiah Naidu had set up a committee to examine rules and procedures and conduct of MPs in the upper house. And that committee was headed by former Rajya Sabha Secretary General Mr. Agnihotri, and that committee has given its report. We don't know what is in the report. The new chairman will have to now figure out whether he wants to implement those recommendations or wants to institute another study de novo on how rules and regulations should be spruced up.
this will have very important implications for the conduct of the House in the coming days. So that's something we have to look out for. That's one. Second, any chairman in any house needs not only to have a thorough knowledge of rules and precedents and law, but also has to have an outreach to members of parliament outside parliament in order to ensure that the house conducts itself seamlessly and without difficulty. And there I think Mr. Dhankar has a great advantage because as one of the previous panelists pointed out, he has been in all parties, he has a socialist background, he is a relative newcomer to the BJP. He was spotted, his talent was spotted by a former law minister and former finance minister Arun Jaitley when the two were together serving in the VP Singh government. And after that, so whether that is going to be an advantage, Mr. Srivastav, for him, because he, has not spent relatively so many years in the BJP, and especially when the vice president nominee comes from the ruling alliance, the onus is, and the real test, in fact, is on him to win the trust of the opposition parties. देखिए, एक चीज़ तो मैं आखिरी से शुरू करूँगा, जहाँ सवाल है कि अपोजिशन का जो ट्रस्ट है वो विन करना, वो तय बात है कि जब पद का चुनाव हो जाएगा तो सबके लिए दोनों ही पक्ष बराबर हैं। और अभी तक की ये परंपरा रही, अच्छी बात ये रही है कि उसको बहुत कायदे से निभाया है। वेंकैया नायडू साहब ने भी उनके लिए, वेंकैया नायडू साहब के लिए खासतौर से ये बात रही है कि वो उनकी बातों को पक्ष के लोग तो मानते ही रहे, विपक्ष के भी लोगों ने बहुत आदर मान सम्मान के साथ समझाया और वक्त ज़रूरत पे उन्होंने किया। जगदीप धनखड़ साहब के साथ जो लगभग तय है, क्योंकि 780 वोट पड़ेंगे अगर कोई बीमार नहीं होता है, या तो उसमें 780 में देखना सिर्फ रोचक ये होगा कि क्या 540 का मार्क जो द्रौपदी मुर्मू जी के चयन में था वो उससे आगे बढ़ता है या कम होता है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का अगर चयन होता है तो उनका जो व्यवहार है वो और भी विटी हैं, वो वन लाइनर उनके बड़े मशहूर हुए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में उनका इस्तेमाल करते रहे हैं और एक मतलब सामान्य ढंग से बहुत तनाव में नहीं रखने की बात है। और कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, हम सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। ये बात दूसरी कि भाजपा में वो 20 ही साल हुए लगभग, लेकिन उस 20 साल में उन्होंने बहुत कुछ भाजपाइट रह चुके हैं, मतलब वो पक्के हो गए हैं, भाजपा वाले हो गए हैं। लेकिन अब उनका दूसरा रूप होगा, बराबरी से देखने का होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि धनखड़ साहब उस मामले में बहुत आगे रहेंगे और उससे मैसेज भी बहुत सारे जाएंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में। जो आजकल हम लोग सब लोग यही देखते हैं कि इसके होने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, वो भी मुझे लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस के साथ वो आगे आएंगे। आगे तो फिर धीरे धीरे ही पता लगेगा हम लोगों को। जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जो पहलू सामने उभर के आएंगे, जिस तरह से मतदान होगा और उसके बाद कौन कहाँ खड़ा है, दल किसने किसको वोट दिया, उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल उपराष्ट्रपति पद का पद खासा अहम है संवैधानिक दृष्टि से। प्रोफेसर A.K. वर्मा जी कानपुर से हैं, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के। A.K. वर्मा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव देश में हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसके लिए आप कैसे देखते हैं इस संवैधानिक पद को, क्योंकि दो अहम जिम्मेदारियां उपराष्ट्रपति पद के पास रहती हैं? देखिए, ये तो निर्विवाद है कि उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न केवल इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि उसमें एक जो संवैधानिक प्रावधान है वो ये भी है कि किन्हीं विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति यदि उसकी त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या हटा दिया जाए अपने पद से, या अदरवाइज अगर कोई किसी वजह से वैकेंसी होती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का दायित्व निर्वहन करता है। तो जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है और इस संभावना को भी मद्देनजर रखना पड़ता है कि भाई उपराष्ट्रपति, कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि वो राष्ट्रपति के पद पे काम कर सकता है।
तो उपराष्ट्रपति को केवल सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस संभावना पे भी हमेशा निगाह रहती है कि कभी वो राष्ट्रपति के रूप में भी हो सकता है। तो मैं इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद मानता हूँ और इसकी चुनाव को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और इसलिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों मिलकर हमारे एक प्रकार से जो टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको ये एक प्रकार से निर्मित करते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव को। Absolutely. So last month we saw, the election to the office of the president, wherein the NDA nominee, Madam Draupadi Murmu, was elected as the president of the country, and today the election to the office of the vice president is taking place, the 16th vice presidential election to elect the 14th vice president of the country. Both my colleagues, Pawan Sharma and Kriti Mishra, are joining us from Parliament. Kriti, coming to you first. About 15 to 16 minutes into the voting procedure, tell us what's happening outside room number 63. Right, that's right. Joining us right now are members of parliament and also ministers, the union ministers. Let's get in a word from them. शुरुआत करते हैं सर, किस तरह से देखते हैं आप इस साल के वाइस प्रेसिडेंशियल 2022 के वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव को? निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का विषय है कि एक किसान का बेटा जो आज उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे सदन में हो, चाहे देश के विषय पर हो, कहीं पर भी हो, तो किसान का बेटा अपनी बात किसान और देश के लिए रखेगा। तो निश्चित रूप से आज जो मतदान हो रहा है, जिसके अंदर हमारे उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ साहब, तो निश्चित रूप से उनका एक व्यक्तित्व बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, और साथ ही उन्होंने जिस तरह से कोर्ट के अंदर उनका जो समय रहा, या उनका जब वो मिनिस्टर भी रहे और राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जो गरीबों के लिए और उनकी जो समस्याओं को सुना था, और उनका जो एक जिस तरह से समस्या सुनना और उसका समाधान करने का जो रहा था, वैसा ही आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जगदीप जी धनखड़ हैं, उनके नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से जो काम होंगे उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आज बहुत ही खुशी का विषय कि एक राजस्थान का और किसान का बेटा जो बहुत ही स्ट्रगल करते हुए और आज इस उच्च पायदान पर पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आज देश के नेतृत्व, देशों का आने वाले समय राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मुख्य समस्या और देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। All right, so as the union minister, the MOS for Agriculture, Mr. Kailash Chaudhary, is saying that this is an inspiring story. But as we are continuously telling us, our viewers, that the election process is on right now. And also joining us, the member of the upper house, Mr. Brijlal. Sir, आप किस तरह से देखते हैं 2022 के वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव को? ये चुनाव, ये बीजेपी और एनडीए ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहले एक आदिवासी महिला को गांव से जो पैदा हुई, झोपड़ी में रही, उनको ला करके राष्ट्रपति बना दिया, और आज वही चीज़ दोहराया जा रहा है जब एक किसान का बेटा जो गांव में पैदा हुआ, नंगे पांव पढ़ने जाता था, अपनी मेहनत से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बने, राजस्थान में एमएलए बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, और आज वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है देश का, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हैं, ग्रास रूट के व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ उनका जो संविधान की जानकारी है, उनको कानून की जानकारी है, किसानों की जानकारी है, गरीबों की जानकारी है। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा कि हमें एक ऐसा उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है जिसको मैं सही भाषा में कहूँगा, अंग्रेजी सब ऑलराउंडर हैं। All right, so as we've been reporting since morning that the BJP is absolutely confident of the numbers, because the BJP thinks the BJP is absolutely confident that as far as the numbers are concerned, the BJP alone stands at 394, and with the help of other parties, for instance, the YSRCP, the BJP, it hopes to cross the 500 mark. So we'll have to see how that pans out right now, because the election process is continuing and will continue till 5 p.m. Back to the studio now. जी, शुक्रिया कृति। मेरे सहयोगी पवन भी इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। पवन जी, क्या आपके पास जानकारी है?
मनोज जी, जो सांसदों का, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है तो सांसदों का आना लगातार जारी है। हमारे साथ भी अभी सांसद थे पर वो जल्दी में थे, निकल गए हैं अभी। तो लगातार वोटिंग जारी है। लोग जो है, सांसद जो है पहुंचने लगे हैं, गाड़ियां लगातार यहाँ पे जो है आ रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार सांसदों का आने का सिलसिला जो है, चाहे राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा के सांसद, वो आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी मतदान करें, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी। जी पवन जी, वैसे अगर मैं नज़ारे की बात करूं, क्योंकि जाहिर तौर पर सुबह का वक्त है और हमने देखा कि बड़ी संख्या में सांसद सदस्य पहले अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने करीब सांसद वगैरह, किस तरह से, क्या नज़ारा है? जाहिर तौर पे क्योंकि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सभी सांसद, तो सभी सांसद आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी मतदान होगा। हमने देखा कि बहुत सारे मंत्री पहले ही कतार में लग गए थे, जैसा तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं। और यहाँ जो है मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं, सांसदों के आने का सिलसिला हर पार्टी के हैं, वो अपना वोट जल्दी से जल्दी डालना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार मनोज जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी हमारे पास भी सांसद जैसे आएंगे हम आपसे बात भी करवाएंगे उनकी। तो ये क्योंकि सभी वोटिंग के लिए जल्दी जो वोटिंग करना चाहते हैं पहले, तो उसके लिए वो लगातार रूम नंबर 63 की तरफ जा रहे हैं सभी सांसद। जी बिल्कुल, धन्यवाद पवन जी आपका। दरअसल हर चुनाव का, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अपना एक संदेश होता है और इस उपराष्ट्रपति चुनाव का भी अपना एक संदेश है। खासतौर से अगर मैं मत का पहले प्रयोग करने का जो उत्साह जनप्रतिनिधियों में, सांसद सदस्यों में देखने को मिल रहा है, वो अपने में एक संदेश है कि हम जब भी चुनाव हो अपने मत का प्रयोग पहले करें, आगे आके करें। अक्कू जी, अगर हम बात करें इस चुनाव की, इसमें गणित जो है बिल्कुल साफ है। जो एनडीए का गणित है, बीजेपी का गणित जो है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि क्या तस्वीर होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा विपक्षी एकता की। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्षी एकता का जब विषय आता है तो उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा होती है। और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी क्यों बनाई? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इनकी जो दिक्कत है विपक्ष की, कि पहले तो आगे हाथ बढ़ाना वाली स्टाइल में आगे बढ़ते हैं और फिर वो खींच लेते हैं। जगदीप धनखड़ साहब राज्यपाल थे वहाँ के, लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस ने इनका आरोप है कि कांग्रेस ने बिना उनसे बात किए हुए, ममता दी से बात किए हुए प्रत्याशी को घोषित कर दिया, इन्होंने इसलिए उससे वो अलग रहेंगी। ये इतना झटके वाला प्रोग्राम था, मामला था विपक्ष के लिए, कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते विपक्षी एकता के लिए, कि मान लीजिए नहीं भी पूछा गया, नहीं भी बात हुई, लेकिन कम से कम फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन यूनिटी, विपक्ष की एकता के लिए तो कम से कम आप ये कर सकते थे और कम से कम इसका बयान तो नहीं जारी करते। यहाँ ये जो करना था ये बहुत ही खतरनाक हुआ। So we'll take a related question on opposition strategy, the opposition unity, and in fact cracks in the opposition unity from Aditi ji. But let me go back to Pawan, who's joined by some members of parliament, I believe. Pawan, who do you have with you, and get us his views? टीना हमारे साथ हैं, गोरखपुर के लोकसभा सांसद रवि किशन जी। रवि किशन जी, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार मतदान हो रहा है, आप भी जा रहे हैं अंदर, क्या कहना है आपका? एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आदिवासी समाज से एक महिला को ला के, प्रथम महिला बना के पूरे विश्व को एक संदेशा दिया, एक ट्राइबल कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में, और पूरा देश और पूरा आदिवासी समाज और पूरा गरीब तबका और जितना नीचे का पिछड़ा तबका जो अपने आप को कुचला हुआ समझता था 70 साल से, उन लोगों में एक गर्व आया, सम्मान आया। उसी तरह किसान वर्ग को, बीच में बहुत सारी राजनीति में लोगों ने बहुत कुछ तुष्टीकरण करना चाहा, किसान समाज को धनखड़ जी के आने से एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे समाज को जा रहा है, जो हमारे अन्नदाता हैं। तो विश्व के फार्मर को, ना कि यहाँ के, कि एक फार्मर के बेटे को भी इस देश में उपराष्ट्रपति के लिए एक सरकार, एनडीए की सरकार खड़ा कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जिगरा है, ये उनकी सोच है, एक विचार है कि एक नए भारत में सब कुछ नया होगा। जिसको सब लोग 70 साल से दबा के, कुचल के, पाताल में गाड़ के रखे थे, वो सारे लोग आ रहे हैं और गर्व से अब कह रहे हैं कि मैं फार्मर का बेटा हूं और मैं उपराष्ट्रपति हूं, मैं आदिवासी समाज की बेटी हूं और मैं इस देश की राष्ट्रपति हूं। ये समय, ये सुंदर समय, इसी को कहते हैं ना कि जैसे एक
सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था। ये स्वर्णमय समय से जो भारत गुजर रहा है, मैं उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। तो आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए अपना वोट देने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। धनखड़ जी को कितना समर्थन मिलेगा और क्या क्रॉस वोटिंग होने की भी संभावना? ऐतिहासिक जीत होगी और सारे विपक्ष उनको आके दिल से वोट करेंगे जो पिछली बार किए थे। देख, पूरा विपक्ष ने भी मन बनाया कि सब लोग छुप के क्रॉस वोटिंग करेंगे और सब लोग अपनी पार्टी के साथ सब लोग क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के हमारे धनखड़ जी, क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति को उनको राज्यपाल के रूप में लोगों ने गवर्नर के रूप में एक लड़ते हुए लड़ाका की तरह देखा कोलकाता में। उनकी सोच, उनके विचार, ही इज अ वेल लर्नड मैन। Several of these members of parliament speaking to our colleagues, and one common aspect that all of these members have highlighted, mostly of the BJP, is the humble background of both. Earlier on as well, Mr. Venkaiah Naidu back in 2017, and now Mr. Jagdeep Dhankad also hailing from a humble background, coming in from a farmer's family, and known for qualities, like modesty, simplicity. How big a quality is this, of course, to run the house, because that's going to be of utmost significance for the government, Aditi ji, and also, the kind of messaging that you see all of these aspects, going forth to the larger public. इसमें चीज मैं और जोड़ दूं, किसान का बेटा, इसे आप कैसे? तो जहाँ तक किसान के बेटे की सवाल है, तो मेरे ख्याल से यूक्रेन और रशिया और जर्मनी में ये अपेक्षा रखना कि वहाँ के किसान भी ताली बजा रहे होंगे धनखड़ जी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ा अति है। लेकिन जैसा रवि किशन जी ने कहा कि विश्व के किसान इस समय बहुत खुश हैं, कि गौरवान्वित फील महसूस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक as far as the conduct of the house is concerned, certainly it's going to be very crucial. Mr. Dhankad, as we know, has a very thorough knowledge of the law. Very few people know that in the Ajmer Sharif Dargah bomb blast case, in which Swami Asimanand was indicted and later acquitted, he organized, because he was a Rajasthan based lawyer, he organized from behind the scenes a lot of the legal defense of those people, and some of them were acquitted, some like Indresh Kumar, and who's a very senior RSS functionary, some were acquitted, some were not. But a lot of the legal defense was done by current minister in the central cabinet, Bhupender Yadav, and Mr. Dhankad. आदित्य जी, आपसे समझेंगे इस बात को भी हम, लेकिन मेरी सहयोगी कृति इस समय मौजूद है संसद भवन परिसर में। जी कृति जी। All right, so as we are continuously showing the coverage of vice presidential election of 2022, I have the esteemed members of parliament and also union minister right now with Sansad television. General V.K. Singh, welcome to Sansad TV. How do you look at the vice presidential election of 2022? We look at the most performing and able man winning it, or able person winning it. And I've got full faith that the candidate fielded by NDA will win by a big margin. All right, there's confidence there. Ma'am, आप कैसे देखती हैं? मैं बहुत अच्छे ढंग से देखती हूँ और जीत तो पक्की है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस हम लोग एक अपना काम बाकी है, बाकी परिणाम सबको पता है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत अच्छे प्रत्याशी को वोट करने का अवसर मिल रहा है, हम सब वोटिंग करने जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। जुगल जी, आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, ये बहुत अच्छा दिन भी है, और जिस तरह आज हर सांसद वोटिंग देने के लिए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरह का यहाँ का माहौल बन रहा है, जिस तरह के एनडीए के उम्मीदवार को, प्रत्याशी को जिताने के लिए हर्ष उल्लास से देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और जिस तरह सब लोग सुबह से उठ के अपना वोट दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। All right, also with us, Union Minister Mr. Patil sir, how do you look at the vice president election of 2022? देखो, ऐसा है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ना बल्कि विकास के माध्यम से, बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी, जैसे राष्ट्रपति जी हमारी मुर्मू जी बन गई, एक सामान्य परिवार से थी, अभी उपराष्ट्रपति भी जो नीचे से आए, एक सामान्य परिवार से आए हुए आदमी को उपराष्ट्रपति बनाना, ये
मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों में जो उत्साह है, जो उत्साह आज आप देख रहे हो, वो उत्साह इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वहाँ पे ना कोई बड़े परिवार से आने की ज़रूरत है, ना कोई किसी का नाम होने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी एक खुद ऐसी है कि जो सामान्य कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम करती है, एक नेता को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने का काम करती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। Alright, we also have with us lady member from the Rajya Sabha. मैम, आप किस तरह से देखती हैं इस बार के वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में और सच में जो लोकतंत्र का मतलब है वो दिखाई दे रहा है। एक सामान्य से पारिवारिक सामान्य से कार्यकर्ता को ऊपर लाके, और यहाँ पर देखिए जैसे आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय मुर्मू जी को बनाया और उपराष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी बनाया। और हम लोगों को देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़ जी, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं को हमें भी मतदान करने का सौभाग्य मिला है उनको। और आप विश्वास मानिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एनडीए के मतदाताओं के चेहरे पे खुशी है, तो निश्चित तौर से उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी जीतेंगे। जी मनोज जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एनडीए है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज है, और लगातार जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार एमपी चुनकर या फिर राज्यसभा में आए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा फॉर्चून है कि उन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोनों में वोट करने का मौका मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से पूरा दिन होता है, क्योंकि अभी इलेक्शन की शुरुआत हुई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। Absolutely. So half an hour into the voting procedure and we can see palpable enthusiasm among the members of parliament. Kriti, thank you for getting us views of the various members of parliament representing the BJP in both houses of parliament. Continuing with our discussion on, about the two candidates who are in the fray for the second highest constitutional post in the country. Professor Verma, coming to you, even though these posts are non-political, they are constitutional posts, but the choice of candidate largely, what we've seen over the years is the choice of candidates is largely dependent on the kind of messaging that the political parties want to give, and most significantly, especially in the just concluded presidential election that we have seen by choosing Madam Draupadi Murmu as the candidate who eventually went on to win the presidential election. There was a larger message of inclusion, of empowering a community that had largely been neglected for decades. Now, with this vice presidential election underway to elect the 14th vice president of the country, what is the messaging that you see that both sides are trying to give in, the way of selecting both candidates, Mr. Jagdeep Dhankad and Madam Margaret Alava? As far as I can see, both the candidates come from, very important background, and both have probably some judicial background and very important judicial background. Besides that, Margaret Alava has a very long, tenure as member of 4 times member of Rajya Sabha and then member of Parliament and various ministries, right from Narasimha Rao's days and so on and so forth. And Mr. Dhankar also has the experience of being Supreme Court lawyer and also the West Bengal. And he was also member of Parliament once and also member of Rajasthan Assembly. So both have very, very, a political background. You cannot say that they are coming from a non-political background. They both have a political background. But the question is that the kind of messaging that both the political parties are trying to give is very important. And the importance, especially in the light of the choice of the NDA candidate, is that for several, not only this election, not only the vice presidential election, but if you see the entire gamut of NDA government, Modi government, right from 2014, and club it with several other, demonstrative acts like awards and this and that, the messaging is going from the government that democracy is a government of the people, and of the people means even the people on the margins and the people on the subalterns and people, the poor, they have a chance to be on the top positions of the country constitutionally. So that is one messaging which I can see that the government, incumbent government is giving to the society as a whole, that everybody has a hope that one day a humble background person can also be on the top slot. That is one. So far as the Congress messaging is concerned,
I think the messaging has been slightly, derailed because for one simple reason that bringing a vice president candidate as a lady, there was a conceptual flaw because you have to balance, when we have a president from the north, then we have a vice president from the south. When we have a lady as the president, then probably a female person has to be a vice president. Something this kind of also a combination has to be worked out. And their choice of a female candidate for the vice presidential candidate when already there is a female candidate for the presidential post was slightly, misplaced. That is one. But choosing a women candidate, of course, they were also trying to give a signal that okay, let me get in Aditi ji's views on this. They brought Murmu as the Aditi ji, how do you look at these calculations that Professor Verma spoke about? And another aspect that I want you to touch upon is the fact that there's a distinct feature this time around by the NDA. So the last time back in 2017, it chose to nominate an active politician, a senior union minister from the cabinet to become the vice president of the country. But this time the selection has been a little different in the fact that you chose a governor of a state and who's not active in central politics. So how do you interpret that kind of selection change from 2017 to 2022? So I don't know what the thinking was behind selecting a person who is in that sense not a politician, an active politician, as you say. He was a governor and so he was selected. Maybe the government, the Prime Minister and his colleagues were very impressed with the way he handled events in West Bengal, which was a tough posting for any governor from the government. This government has sacked governors as well in the past. So appointing a governor to the Rajya Sabha chairmanship and vice president, which is an overtly political position, is not surprising. But as far as the opposition candidate is concerned, well, I think despite knowing that there was zero chance of her making it, the fact that Margaret Alava decided to take the plunge and become the losing candidate, agree to become the losing candidate, in itself does her a lot of credit. I am unsure about why the Trinamool Congress was so offended, because after all they had crossed swords with Mr. Dhankar, and to now support him as vice president, and there he will exercise enormous power over the conduct of Trinamool MPs, because there are a large number of Trinamool MPs in the Rajya Sabha. So the chances are that they will clash again. नहीं आदित्य जी, इसमें एक चीज में एक पहलू और है कि तृणमूल कांग्रेस की जो इस पे स्टैंड रहा उपराष्ट्रपति पद को लेकर, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस से किसी प्रकार की उनकी प्रतिस्पर्धा विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ कर लेने की, या अलवा जी के साथ उनका कोई पुराना ऐसा रिश्ता, क्या वजह है इसके पीछे? मेरे ख्याल से अलवा जी और तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, जो शीर्ष नेता हैं ममता बनर्जी, उनके बीच कुछ इतिहास में मतलब कुछ साल पहले मनमुटाव रहा होगा, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो खुलासा या जो स्पष्टीकरण ममता बनर्जी ने दिया कि हम धनखड़ जी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हमसे पहले नहीं पूछा और अपने आप एक कैंडिडेट को उतार दिया मैदान में, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। जी जी बिल्कुल, जैसे अभी टीना जी ने अपना सवाल में बात कही, जो एक संदेश की है, मैसेजिंग की जो बात है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक मैसेजिंग, सामान्य परिवार से धनखड़ साहब का ताल्लुक, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं किसान परिवार से उनका ताल्लुक, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने किसान परिवार से ताल्लुक रहने पर खासा जोर दिया है इस बात पे, आप कैसे इसको जो मैसेजिंग है, जो संदेश है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति अब इतनी सीधी सादी नहीं रह गई है कि आप उसको किसान परिवार कह कर के कुछ आगे हो। पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले इलेक्शंस में वो मैसेजिंग का इस्तेमाल कितना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
कोई एक वर्ग विशेष कितना नाराज है और उसको खुश करना है, ये एक अलग मैसेज होता है। तो धनखड़ जी इन सब फॉर्मूले में थोड़ा ज़्यादा अच्छे फिट होते हैं। और दूसरा जो उनका व्यक्तिगत ज्ञान है, जो उनकी व्यक्तिगत आभा है, प्रतिभा है, वो उनके चयन के लिए मुख्य जिम्मेदार थी। और इसी वजह से देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये जो वर्तमान नेतृत्व है वो हम लोग अटकलें लगाते रहते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, एक दूसरा नाम अक्सर होता है। ये पिछले 3-4 चुनावों में हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, तो उसमें हम लोग जो अटकलें लगाते हैं और बहुत बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, वो सब किनारे हो जाता है और नाम जो सुनकर के सामने आता है वो एक अलग किस्म का होता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है, कोई भावावेश में काम नहीं होता है। दूसरा कि कहाँ कितना बड़ा उसका मैसेज जाएगा, जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं। तो धनखड़ जी के चुनने से अगले विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। किसानों का के लिए उतना ही मैसेज जाएगा कि किसान जो अभी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड किसानी से रही है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वजह से उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और पॉलिटिकल मैसेजिंग और वो दूसरे जो प्रत्याशी हैं उसमें कितना धाकड़ रोल अपना पाएंगे, धनखड़ साहब का एक धाकड़ रोल भी होगा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल। ए.के. वर्मा जी, मैं आपसे भी इस बात को समझना चाहूंगा क्योंकि ये बात एक सियासी संदेश की भी है, सामाजिक संदेश की भी है और चुनावी दृष्टि से रणनीति की भी है। हमने देखा कि आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया एनडीए ने और उसका परिणाम यह हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का उस समय साथ छोड़ गया, विपक्ष का साथ छोड़ गया और अब देख रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली। क्या इसका असर आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में राजनीतिक दलों को अपने अपने राजनीतिक हितों को संवर्धित करने का अधिकार है। इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि उनको ऐसा करने का अधिकार है। और चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो बीएसपी हो उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट के एंगल से चीजों को देखा है और ये उनको देखने का अधिकार है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपने साहब राष्ट्रपति के चुनाव में ये स्टैंड लिया था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों स्टैंड लिया, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। हर चीजें हर क्षण हर पल बदलती रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने कैलकुलेशंस करने का अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि जो भी राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण हैं कि भाई उपराष्ट्रपति पद को लेकर उनका क्या रणनीति रहनी चाहिए, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने 2024 को जरूर मद्देनजर रख के अपने अपने राजनीतिक हितों के अनुसार इस मुद्दे पे स्टैंड लिया है। और दूसरी चीज जो ये मुझे कहनी है कि जो विपक्षी दल हैं, जब नॉर्मली एक नेशनल लेवल पे डिस्कोर्स होता है कि अपोजिशन यूनिटी, तो हम लोग एक बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, एक बहुत ही अजीब से दुनिया में रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक मोनोलिथ टाइप का क्रिएट हो रहा है पूरे कंट्री में, जो कि अपने को अपोजिशन कहता है। लेकिन आप शायद ये जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जब एक परिवार में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो अचानक सैकड़ों दल हैं, उनमें एका कैसे हो सकता है केवल कह देने से कि अपोजिशन यूनिटी। बट सवाल ये है कि अपोजिशन यूनिटी का मुद्दा क्या होना चाहिए और क्या वो ऐसा मुद्दा होता है जिसमें कि सारे Absolutely. So we'll continue to, discuss all of these aspects with all the distinguished panelists who are with us in the studio. But let me go back once again to Kriti. Kriti, what's the latest? Nearly 45 minutes into the voting procedure. What is the scenario like? How many members of parliament have actually exercised their vote? Right, Tina. So right now, as we know that this is the vice presidential election that is going on, and we have both the members of the opposition as well as the NDA right now. Sir, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से देखते हैं आप वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव 2022 को? आज सारे राष्ट्र के लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि आज शाम को भारत को देश का नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी की बहुत बड़ी जीत आज के इस चुनाव में होने जा रही है, जो हमारे लिए बड़ा खुशी का अवसर है। Right. Also, we have with us other members. We also have Dr. Kannimoy and Mr. Tiruchi Siva from the DMK. Sir, how do you look at the vice presidential election of 2022?
election for the second highest constitutional authority. The Vice President is being held today. India, being the largest democracy, selects every person who has to protect the constitution and run the parliament in a very democratic manner. We are all very happy to be a voter in this election as member of parliament in the Rajya Sabha representing DMK. Today 788 members are casting their franchise, exercising their franchise, 233 from Rajya Sabha and 543 from Lok Sabha, and nominated members to 8 members are vacant, that apart. But we are very happy that the president election, as soon as it's over, now the vice president election is being conducted. And we are all very happy that we are going to be a part of electing the vice president who is going to run the Rajya Sabha also as the chairman of the August House. So it's a great election. DMK members are all here. Right, sir. Also, we have Certainly. with us So Dr. visuals Kani on Mohi, your who's screen, you can also a see member, Union Home lady Minister member Mr. Amit from the Shah Rajya Sabha. entering the venue. He's going to exercise his vote to elect the Vice President of the country. And, as you heard, members of the opposition as well, Aditi ji, talking about how it's a very momentous occasion for the Indian democracy, because that's the beauty of democracy, no matter who has the advantage. But the fact that, elections are held, there are opposing candidates, and in the history of the Indian democracy, this is the 16th presidential election. Only on 4 previous occasions has the Vice President of India been elected unopposed. So even though the numbers are heavily stacked in favor of one candidate, there is always an election barring 4 times. And, that is what strengthens our democracy decade on decade. I couldn't agree with you more. The fact is that even when a candidate knows he or she is going to lose, he elects to throw up a challenge. He or she represents a different way of looking at Indian democracy, a different way of looking at politics, a different way of looking at the ruling alliance, and that in itself is a very important part of the whole system of electing somebody. Mrs. Alava, knowing that she is going to lose, has still stood up because she stands for certain ideals and certain ideas that challenge the present dispensation on a variety of issues. They may agree on some issues, but they don't agree at all on many others. And she has opted to stand, even though she is not going to be successful in a fight which is for her a fight of ideology and of ideas. So, yeah, Absolutely. it's And talking very, about, very important. the beauty and the strength of democracy, you can see on your screen the members of parliament, the elected representatives who the common people of this country elect. They are today casting their vote to elect the vice president of the country, the second highest constitutional post of the country. Rare and interesting visuals, Mr. Shrestha. This is and along with the presidential election, these are the only 2 elections where we see the traditional ballot box. So a classic example of, how even though we are celebrating 75 years of our independence, a connect between tradition and modernity. So while in the general elections, we are used to, using the much advanced electronic voting machines, these are the 2 election to the highest offices where we are still seeing the old way of casting a secret ballot and putting it in that old ballot box. मुझे लगता है इसके लिए बहुत सैद्धांतिक आधार हैं, और एक बहुत आसान सी चीज़ आप कह सकते हैं कि क्योंकि नंबर्स कम होते हैं, लेकिन दूसरा, अगर मान लीजिए चुनाव में ऐसी स्थिति हो जाए कि 3 प्रत्याशी हों, 4 प्रत्याशी हों, और फिर उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, चौथी वरीयता, तो फिलहाल की जो व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक मतदान में शायद संभव नहीं होती। इसमें ये आपके लिए संभव है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो एक ट्रेडिशनल है और बहुत आसान सा एक व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा आपको बैलेट बॉक्सेस को इधर से उधर नहीं करना है, थोड़ा कोई भी संभावना नगण्य होती है कि इसमें किसी तरीके की धोखाधड़ी होने की संभावना हो, जो पुराने ज़माने में आज से 20-25 साल पहले जो अन्य राज्यों के चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी सब जगह सभी जगह होता था
कि न जाने क्या क्या खबरें आती थी, वो उन सब से मुक्ति हो जाती थी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक उसमें ईवीएम में हुआ। लेकिन इसमें क्योंकि एक जगह पर एक कमरे में एक हॉल में हो रहा है और कहीं उसका कुछ है नहीं, आज शाम तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया पिछले दिनों से चली आ रही है और इसमें कोई खोट किसी को नहीं नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो कंटिन्यूटी में बनी हुई है। एक इलेक्शन को लेकर के मैं जो सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहेगा देखने का कि क्या क्रॉस वोट होते हैं, नंबर 1, क्योंकि पिछली बार क्रॉस वोटिंग 17 लोगों की हुई थी। नंबर 2, 12 लोगों के इनवैलिड हो गए थे, वो देखना होगा कि कितने कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बीजेपी तो बहुत इस मामले में चालाकी से काम करती रही, बड़ी प्रैक्टिस कराती है, काम कराती। क्या विपक्ष ने भी उतना काम किया? दूसरा, जो एक नया तथ्य जो हम सब लोग कर रहे थे, अदिति जी ने इंगित किया कि एक एब्सटेन होने का जो तृणमूल कांग्रेस ने दौर शुरू किया, तो क्या तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोई और भी रूप अपना सकता है? फिर कुछ इस चुनाव में एक आध चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि पहले द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और अब फिर विपक्ष में आ गए, तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो गणित गिनने में और आगे की राजनीति की जब हम जोड़ करेंगे 2024 की, उसके आसपास की, अभी गुजरात और जगह जब चुनाव होना है वहाँ की, तो वो शायद थोड़ा सा काम आएगी। ये अब चुनाव बहुत माना जाना चाहिए बहुत सात्विक नहीं रह गए हैं, सब कुछ गणित पर है, पहले भी होता रहा होगा, होता था, 40-42 साल से हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब और एक शतरंज का खेल है जो जिसमें हाथी भी है, घोड़ा भी है, कहाँ क्या चलना है, वो सब पूरा But you know, the fact that no party can still issue a whip even for the election to the Vice President, Aditi ji, is significant. And that is where, the question about cross-voting comes into picture. In the just concluded presidential election, we saw widespread cross-voting despite the fact that several parties from the opposition had already previously announced support to the NDA nominee. So he indicated towards the JMM that voted in favor of Madam Draupadi Murmu and now is supporting Madam Margaret Alava. But we can understand that, as a choice of candidate back then in the presidential election, there were parties who had to answer to their own voter base. Parties like the JMM that largely depend on the tribal voter base. But in the vice presidential election, looking at the strong background of both parties, and do you anticipate cross-voting in this particular election as well? Well, there could be, there might not be, I don't know. I don't really see that much possibility of cross voting in this election, but as Akkuji said, we have to see, because if there is cross voting, the rage and anger of opposition parties and the animus against each other is far deeper than we thought it was. So I'm not anticipating any cross voting on the part of the NDA alliance partners. It is cross voting. If it happens, it will happen from the opposition. So we have to wait and see. आदित्य जी, जो इस एक चुनाव का, अगर दोनों चुनाव की मैं बात करूं, राष्ट्रपति चुनाव की भी, उपराष्ट्रपति चुनाव की भी, इन दोनों चुनावों में एक बड़ा प्रबंधन की दृष्टि से, मैं को राजनीतिक दृष्टि से कौन कहां खड़ा, वो एक अलग विश्लेषण का, बहस का मुद्दा, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन चुनावी प्रबंधन की अगर मैं बात करूं, हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए का दायरा, बीजेपी का दायरा चुनावी दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से बढ़ता चला गया। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस सबसे बड़ा दल है विपक्ष की तरफ से, उसकी जो रणनीति हम देख रहे हैं जिसमें वो और छोटा होता जा रहा है, जो विपक्ष में दल हैं वो भी साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या कहीं फ्लोर मैनेजमेंट या रणनीति में कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि रणनीति में कहाँ चूक हो रही है, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपने क्षेत्रीय सवाल होते हैं उसके सामने, और भी इश्यूज होते हैं, तो चूक कहाँ हो रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस कोशिश कर रही है, अभी जो हाल में हमने पूरा उनका आंदोलन देखा महंगाई पर, कोशिश ये कर रही है कि वो ऐसी चीज़ों पर फोकस करे जो कि एक तरह से पार्टी विशेष या क्षेत्र विशेष को नहीं एड्रेस करते हैं, और पूरे ऑपोजिशन को साथ लाने की कोशिश हो रही है।
अब देखना ये है कि ये कितनी दूर जाएगा, कितना सफल होगा, कितना सार्थक होगा। लेकिन हर पार्टी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और कांग्रेस चूँकि एक बहुत बड़ी पार्टी रह चुकी है और उसकी प्रेजेंस सारे राज्यों में एक तरह से है, तो इसीलिए जो बाकी क्षेत्रीय ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी मानती हैं कि कांग्रेस हमारा फर्स्ट ऑपोजिशन। जी बिल्कुल इस पे और भी चर्चा करेंगे टीना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये भी विपक्ष की रणनीति के हिसाब से, सत्ता पक्ष की रणनीति के हिसाब से। कृति जी, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ मनोज जी, लगातार हम सुबह से वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कवरेज कर रहे हैं और जैसा कि हम बताते आए हैं, गणित कर रहे हैं, अरिथमेटिक देख रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेशंस है पार्टीज़ की। एनडीए की बात करें तो इस बार प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में भी बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे साथ हैं फ्लोर लीडर बीजेडी के, जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर हैं, सस्मित पात्रा जी। सर, हाउ डू यू टेक द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2022? It's a very momentous situation today when the entire country is looking forward to the next vice president. The Biju Janata Dal, as per the directions of our honorable leader and honorable CM Shri Naveen Patnaik ji, we have voted in favor of Shri Dhankar ji, and this support was already provided by honorable CM Shri Naveen Patnaik ji previously, and we are very confident that Shri Dhankar ji will win today. And he will be the next vice president of the nation, as well as will be a wonderful chairman of the Rajya Sabha. We're looking forward to his tenure very, very expectantly. Alright, सर आपसे भी समझना चाहूँगी। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में जैसा बीजू जनता दल एनडीए को समर्थन दिया था, राष्ट्रपति चुनाव में भी हमारे पार्टी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम लोग उपराष्ट्रपति के लिए धनखड़ जी को समर्थन दिए और उम्मीद करते हैं जैसा गिनती होगा वो काफ़ी मतों से जीतेंगे और होप फॉर द बेस्ट। लेट्स ऑल्सो स्पीक टू द लेडी मेंबर हियर। मैम, आप कैसे देखती हैं इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम लोग सब, पूरा देश अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल है। हम बीजू जनता दल उड़ीसा से है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हमारे जो दल के सभापति है, उनके इंस्ट्रक्शन से हम लोग जगदीप धनखड़ जी को वोट किए हैं। हमको ये आशा और विश्वास है वही जीतेंगे, वही नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। थैंक यू। All right, so those were the BJD members pledging support to the NDA candidate for the vice presidential election of 2022. Back to the studio now. Absolutely. So the procedure to, elect the vice president of the country is on. Nearly an hour into the voting, and several members of both houses of parliament have exercised their vote, starting with the Prime Minister Narendra Modi. And we've been getting you visuals over the past 1 hour of how union ministers, members cutting across party lines, have been coming to the venue, room number 63 of the Parliament House, and casting their ballot to elect the 14th vice president of the country. The vice president-elect is going to succeed Vice President M. Venkaiah Naidu, who has had a tenure of 5 years. He was elected in 2017, and his tenure ends on the 10th of August, before which, it's procedure to elect the next vice president. Aditi ji, let's, briefly also talk about how the tenure has been of the outgoing vice president. Mr. M. Venkaiah Naidu took over. He was an active politician. He was a senior union minister. The fact that he had served as the Union Parliamentary Affairs Minister, the kind of, relations he enjoyed with the members of both houses, members of various parties, helped him in, smooth conduct of the House, barring, of course, the disruptions that we've continued to see that's persisted in both houses. But if you look back at the 5 years of his tenure, what have been some of the significant moments, significant changes that he has brought about in the way Rajya Sabha functions? Well, I think you have to work backwards and see the kind of send-off he got, where even leaders who openly questioned his authority, like Jairam Ramesh, gave him very fond tributes during for his conduct as vice president and also as a human being. So Mr. Venkaiah Naidu we have known him for many years now. He has been a very public and a very accessible figure, and he conducted himself as best he could, because he was under a lot of pressure. The majority of the gap between the majority of the NDA and the opposition was big when he started out. It gradually decreased,
but it was still, the government is still not fully in majority in the Rajya Sabha. He handled, I think, things with great aplomb, and barring the first year when I think there was a slight mishap and an OBC bill moved by the government was defeated because the government did not ensure that it had quorum. Later on, of course, that amendment was passed, but the opposition made a point of it and held up the passage. That was an embarrassment, less for the chairman, more for the Parliamentary Affairs Minister, but barring that, I think it was... Absolutely. And overall, I mean, Mr. Srivastava, you would also agree that if you look back at his tenure, he is a man known for his words, for his one-liners, is often, promoted how the committees must function more. Despite the disruptions